Good morning, students. I hope you are doing good. And today we are going to start with the Rattamar points of accounting standards. See, one of my students, she has written it very beautifully. You can see, check here that S4, how beautifully she has written this. S4 is a contingencies and events occurring after balance sheet date. In that overview has written beta contingencies, events occurring after balance sheet date, dividend declared after balance sheet date, events affecting going concern and disclosure. She made it very clearly that contingencies is a condition or situation. रट्टा मार भी यहाँ पे साइड में लिख के रखा हुआ है. The ultimate outcome of which, whether gain or loss, will be known or determined only on occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Example is provisions for doubtful dates. Okay, very good. So events occurring after balance sheet date, it is a significant events. You can see here, check here that she has written everything which is important by red pen, how it is going to help her at the time of revision. It's very simple now. Favorable and unfavorable that occur between the balance sheet date and date of approval. Significant events is adjusting event conditions which are existing on the balance sheet date, and adjusting events has to be change your assets and liabilities over here, and disclosure part mein non-adjusting event non-existing. Very good beta. Rattamar point, assets and liabilities should be adjusted for the events occurring after balance sheet date, providing additional information relating to the conditions existing on the balance sheet date, non-adjusting which are indicative conditions that arose subsequent to balance sheet date. बहुत बढ़िया तरीके से 2 पेजेस में तो पूरा एस हो गया. एंड देन यू हैव टू यू अंडरस्टूड दैट डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड इफेक्ट अफेक्ट्स द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. वेरी गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा. S5 उसका हेडिंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन लिक्विडेशन बेसिस. ये पिछले इसका थोड़ा सा आगे ले लिया है उसने. इसके भी बेटा 5 पार्ट्स है. नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्सेप्शनल आइटम्स, एग्जांपल्स आल्सो रिटन. वेरी गुड. एग्जांपल्स आर आल्सो रिटन. प्रायर पीरियड आइटम्स के बाद चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, रट्टा मार पॉइंट साइड में इंडिकेटिव हो गया है. एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेटेड पॉलिसी, रट्टा मार चेंजेस इन पॉलिसी. वेरी गुड. Changes in accounting policies if it is become difficult to distinguish. अरे वाह शेर है एकदम. हाँ. S7 principles of accounting for construction contracts in the financial statement of contractors. Very good. Closely interrelated types of construction contract, percentage completion method. आफ्टर दैट फुल रिकॉग्नाइज्ड डोंट वेट स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखा हुआ है. उसके बाद कंडीशंस जो थी 4 कंडीशंस और 2 कंडीशंस वो लिखी गई है. एग्जाम्पल 1, 2 भी बहुत अच्छे तरीके से डाला गया है बेटा. एग्जाम्पल 3, 4 सब एक्चुअली इसमें नहीं लिखना था. ठीक है. अभी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉस्ट की डेफिनेशन भी लिखी गई है. एंड डिस्क्लोजर्स आई थिंक S9 हाँ जी लिखा है. S9 भी लिखा है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन और स्कोप सेल ऑफ गुड्स का रट्टा मार पॉइंट्स. वेरी गुड. रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बोल रहा हूं मैं. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड. वाह, खुश हो गया दिल बेटा. आज जो मैं चाहता हूं वो आपने करवा दिया. Whatever I am expecting from students, she has written it on daily basis. She also attends like you. Screenshot. क्या बोलना था आपका? How many of you have maintained like this? Same thing. Genuinely बताइए in comment section. Today is a Sunday. Still you guys beta, means those who are attending, they have high dreams. संडे है बाबा, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें. वी हैव टू स्टडी. वेरी गुड. चलो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड लाइक दिस? चलो जल्दी बताओ. थैंक यू वेद प्रकाश. He passed with the first group.
अमन बोल रहा है इतना अच्छा तो नहीं पास कर लिख सकता मैं। जिया ने लिखा है यस सर मेंटेन नोटबुक। मोहम्मद ने बोला यस सर मी। अक्षय कुमार बोल रहा है मी। I also maintain like this, sir. I made it like this on daily basis. Very good, Shivangi. Bibhu, yes. Yes, beta Sohel. You can join these classes. I'm preparing for May 24. Yes, beta. You can join. दीक्षा ने मेंटेन किया है, प्राची ने मेंटेन किया है, किरण जी ने मेंटेन किया हुआ है। चले, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने पता नहीं, पर जो भी मेंटेन किया गया है बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन किया है बाय। यस, कार्तिक बोल रहा है आई हैव रिटन सर। वेरी गुड। चलो मैं आता हूं अभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अभी हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन पे। ये किसने ओपन किया? ये तो मेरा हो गया था एक्सप्लेन करके। यस, टुडे आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन फर्स्ट मॉडल क्वेश्चंस। मॉडल क्वेश्चंस, यस। व्हाट इज द मॉडल क्वेश्चन? वेयर इज मॉडल बेटा? जल्दी जल्दी ओपन करो मॉडल। हाँ जी सर, हाँ जी, आ गए हम लोग मॉडल पे। यस, इलस्ट्रेशन 1 के बारे में बात करेंगे फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बारे में एकदम इजी इलस्ट्रेशन। ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे डिसाइडेड on 31st of March 2002 to increase the sales price of certain items respectively from 1st January 2002। एक ही मिनट बेटा। हाँ जी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? दे डिसाइडेड ऑन 31 मार्च 2002 पे दे डिसाइडेड टू इंक्रीज द सेल्स प्राइस फ्रॉम 1st January 2002। 1st January 2002 means 3 months back। In view of the price revision with effect from the 1st January 2002, the company has to receive 15 lakhs from its customer to whom they made the goods to receive 15 lakhs। अच्छा सर, receive 15 lakhs के goods है, माल है, amount है from the customer to whom they have made the sales। सर, customers क्या येड़े क्या ऐसा आप बीच में से sales बढ़ाओगे and they are ready to pay it? हाँ, कौन पे करेगा सर? Who is going to pay this? Tell me। नो वन इज गोइंग टू पे दिस बेटा, ये याद रखो। हु इज गोइंग टू पे ना ऐसा कि सडनली इफ यू से कि नहीं पे मी 15 lakhs रुपीज इफ योर कंपनी एंड इफ यू आस्क मी सर पे, मुझे पे कर दीजिए, तो नॉट पॉसिबल सर। कोई नहीं पे करता है। अल्टीमेट कलेक्शन विथ रीजनेबल सर्टेनिटी सर, हमने उसको रट्टा मार लिख के रखा था, रट्टा मार लिख के रखा था सर। फैक्ट्स ऑफ द केस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड decided to increase the sale price retrospectively, as a result of which 15 lakhs is receivable from its customer। Okay. Provision. As per S9, revenue recognition, where the ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim, the revenue recognition is postponed to the extent of uncertainty involved। In such case, revenue is recognized only when it is reasonably certain that ultimate collection will be made। ठीक है, ultimate collection will be made। ध्यान में रखो, जब भी अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली रीजनेबल सर्टनटी, ये लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एबिलिटी टू एसेस,
the ultimate collection with reasonable certainty is lacking, revenue should be postponed to the extent of uncertainty involved. In such case, revenue is recognized only if there is reasonable certainty for ultimate collection will be made. So language को याद करना पड़ेगा. You have to recall this language. Ability to assess the ultimate collection, ability to assess the ultimate collection with a reasonable certainty is lacking, revenue should be postponed. Ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking. Ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking. Revenue recognition is postponed. Ability to assess the ultimate collection with a reasonable certainty is lacking. Revenue should be postponed. Ability to assess the ultimate collection with reasonable certainty is lacking. Revenue should be postponed. Okay. Very good, beta. Very good. Chaliye. Conclusion. Thus, as per the facts of the case and provision of S, the additional revenue on account of increase in the sales price with a retrospective effect as decided by the board of directors of X Limited is rupees 15 lakhs to be recognized as income for the financial year 2001 to only if the company is able to assess the ultimate collection with certainty. यदि आपको लगता है कि ये हो सकता है, certainty, if at the time of raising any claim it is unreasonable expect to ultimate collection, revenue must be postponed. Language देखो बेटा, ICA ने ना बॉम्ब आपके ऊपर डाल दिया. ICA is not telling you that you record it or it not record it. It's a management decision. If they think customers are ready to pay 15 lakhs rupees and ultimate collection is possible, so better revenue has to be recorded. If you are thinking no, customer is not going to ready to pay this money, then better in that case, you should postpone your revenue. It's in the very simple language. Say yes or no better in comment section. फटाफट बोलो बेटा. समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ या ना, जल्दी बोलने का, जल्दी बोलने का. यस. हाँ जी बेटा, हाँ जी. प्राची बोल रही है सर. यस सर, प्राची बोल रही है. यस सर, बहुत इजी है. वेरी गुड बेटा प्राची. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Y Limited uses certain resources of X Limited. Resources of X Limited को यूज किया गया. In return, X Limited received 10 lakhs and 15 lakhs as interest and royalty. Sir, we are aware na. Interest has to be recorded on the time basis and royalty on the accrual basis. Time proportionate basis. Yes. अब ये मत बताइए हमें पूरा आता है. Already we are aware about the enterprises using resources of using certain resources and they derive some income. तो बेटा ये लैंग्वेज भी बहुत ही जरूरी था. इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, और मैंने भी इसका आंसर दिया हुआ रहेगा. टाइम बेसिस एंड रॉयल्टी accrual basis. Third question. A claim lodged with the railway in March 2001.
A claim lodged with the railway in March 2001 for the loss of goods of rupees 2 lakhs had been passed for the payment of March 2003 for 1,50,000. No entry was passed when the claim was lodged. Advice P Limited. यही आंसर है S5 में था. देखो, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा था. मैं इसलिए इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा था. प्रोविजन ऑफ एस, सेम चीज बेटा, रेवेन्यू शुड बी पोस्टपोन, एंड S5 का भी रेफरेंस दे दिया. As per S5, when items of income and expenditure with the profit or loss ordinary activities are of such size, nature or incidence, there are exceptional item था ना. Exceptional item की definition है, the nature and amount of the items has to be disclosed separately. अभी S का पूरा रट्टा है आप लोगों को, एक अलग लेवल पे आप लोग. अभी conclusion. This transaction cannot be taken as prior paid item. और एक्सेप्शनल करके डाल देंगे. हाँ, खत्म भाई, खत्म हो गया. नहीं रे, एक है ना. In the year 2001-2, XYZ supplied goods on consignment basis. A retail outlet of rupees 10 lakhs. As per the terms, ABC will only pay XYZ for the goods which are sold by the third party. Rest of the goods can be returned back. तो यहाँ पे during the year 2001-2, ABC Limited ने 5,50,000 ओनली क्या किया हुआ है, गुड्स सोल्ड किया, एंड रेस्ट गुड्स आर स्टिल लाइन. तो भाई 10 लाख का क्यों करेंगे, ओनली 5,50,000 वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज ना. रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैज टू बी ट्रांसफर्ड. ओके, ये लाइन लिखना पड़ेगा. एंड इफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर, दिस इज अ प्रोविजन, देन बेटा इन दैट केस वो रट्टा मार पॉइंट में ही था. रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का रट्टा मार लिख के दिया था मैंने, वो पूरा लिखने का, एंड देन ओनली विल गेट द मार्क्स. ये ध्यान में रखो, मार्क्स नहीं मिलेगा इफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स नहीं लिखा तो. चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन फिनिश इट. चलो चलो चलो. देखिए, मेसर्स मून लिमिटेड sold goods worth rupees 6,50,000 to Mr. Star. मेसर्स मून लिमिटेड, ये कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है. सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 6,50,000 टू मिस्टर स्टार. ठीक है, 6,50,000 का माल बेचा. मिस्टर स्टार आस्क्ड फॉर अ ट्रेड डिस्काउंट फॉर 53,000. ओके, एंड इट वाज एग्रीड.
Trade discount has to be deducted. The sales effected and goods were dispatched. On receipt of goods, Mr. Star has found that goods worth rupees 67,000 were defective. अच्छा, 67,000 defective था. And made a payment due to 5,30,000. The accountant has booked sale of 5,30,000. Discuss the contention of accountant with reference to S9. क्या लगता है? चलो बताओ जल्दी से. कंटेंशन क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है बताओ. Correct or not correct? Directly. No. I will show you the answer how to write it. See, first answer है तो मैं लिख के बताता हूँ आपको. ध्यान देना थोड़ा. Write down on the rough page. Facts of the case. I will show you the first answer, how to write it. In simple language, trade discount and sales return is adjusted against sale. Provision. Now that as per S9 and what? ये आप लोग लिखना. As per S9 की शुरुआत होगी रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन्वर्टेड कॉमा. मैं सिर्फ अभी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखूंगा. Revenue is gross inflow of cash बराबर है receivable or other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprise from sale of goods. इतना तो लिख ही सकते हो, रट्टा मारे ये. Trade discount
and volume rebate discount given in the ordinary course of business should be deducted while determination of revenue. While determination of revenue. ठीक है? Revenue from sales should be recognized at the time of transfer of significant risk and rewards. If delivery of sales is not subject to approval from customer, then seller records revenue when goods are dispatched. Conclusion: adjustment of trade discount against sale amount is correct, but sales return, should be disclosed separately. एकदम सिंपल. ट्रेड डिस्काउंट बराबर था पर ये बराबर नहीं था. Now you got to know how to write the answer. अभी सबको समझ में आया क्या बेटा गलती क्या हुआ था यहाँ पे? गलती ये होता कि ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट किया वो ठीक है सर, ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट किया वो ठीक है, पर आप लोग सेल्स रिटर्न को कैसे एडजस्ट कर रहे हो? वो रॉन्ग था. सेल्स रिटर्न को एडजस्ट करना रॉन्ग था. आई होप अभी पूरा समझ में आ गया हो. ये सेल्स रिटर्न को एडजस्ट नहीं करना है, सेल्स को एडजस्ट करना है. अंडरस्टूड? से यस और नो बेटा. चलो बोलो फटाफट. नहीं बेटा फाइनल का क्यों क्वेश्चन रहेगा ये? कितना पेज हुआ रे बेटा? हाफ पेज. 4 मार्क के लिए देखो कितना पेज हुआ. जेन्युइनली बताओ कितने बच्चों को ये प्रोविजन लिखने आया होता? कितने बच्चों को ये प्रोविजन, हाउ मेनी ऑफ यू कैन राइट दिस प्रोविजन? यस बताओ जल्दी से. चार मार्क के लिए हाफ पेज काफी है.
अच्छे से लिखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है. Yes. Now are you enjoying how to write the answer? You understood? Say yes or no. चलो अगला देख रहे हो क्या क्वेश्चन? हाँ बेटा, क्रेडिट नोट मिल सकता है. चलो कर रहे हो बेटा. नेक्स्ट वाला. हाँ क्या कर रहे हो क्या? मैं बताऊँ डायरेक्ट आंसर और यू वांट टू थिंक? चलो एक काम करो. 3 नंबर और 4 नंबर दोनों साथ में डिस्कस करेंगे 5 मिनट बाद. पूरा याद कर लो, फिर दोनों भी साथ में बताता हूँ. चलो याद करो. यू वांट टू सॉल्व एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? S9 के ही मैं दे रहा हूँ. यस. यू वांट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना बेटा? ऑल ऑफ यू. और शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड? S9 मुझे लगा ऐसा लेना चाहिए इसलिए ले रहा हूँ. नहीं तो नॉर्मली मैं लेता नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे दिल्ली के प्यारे प्यारे बच्चे, या पिछले बैच के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ. नॉर्मली मैं लेता नहीं हूँ ये.
बस हो गया रे, बहुत टाइम ले लिया। चलो, क्या हुआ? आपके आंसर्स कोई भेज ही नहीं रहा है मेरे को। नो वन इज सेंडिंग आंसर। कितना टाइम ले लिया रे? चलो भाई लोग, फटाफट बोलिए क्या आंसर है। अरे वाह रे वाह, अमन तीसरे का आंसर भेज दिया अमन भाव ने। चलो, क्या भेजा है अमन ने? गलत छे रे, गलत छे। थर्ड का आंसर गलत छे। हाँ, थर्ड का दर्शन का गलत है। बेटा तेरा आंसर का इंटरप्रिटेशन ही गलत हो गया बेटा। दर्शन। किरण जी रॉन्ग बेटा, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। आपको बेटा नहीं बोल सकते, किरण जी इज वेरी सीनियर टू मी। अच्छा। किरण जी रॉन्ग। विभू, तुम लोगों ने एक लाइन नहीं देखा थर्ड में। थर्ड में एक लाइन नहीं देखा। यू आर नॉट चेक दैट लाइन। ए लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्पैच। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। यू कैनॉट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। 25,000 every 4 months. You have to dispatch goods. B Limited accordingly made the payment of 1 lakh and dispatched the goods. In third month, due to natural calamity, B Limited only requested A Limited not to dispatch goods. But invoice is already raised until a further notice. Remember, these goods in the custody of A Limited on request of B Limited. So this 50,000, you cannot transfer it to received in advance. It is already sales because risk and rewards are already transferred to B Limited. Got the concept? देखो एक बार हिंदी में बता रहा हूं। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट वाइज यदि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना सर, फिर आप लोग कैसे ऐसा बोल सकते हो कि गुड्स आपने ए ने बी को भेजे? तब तक बात ठीक है, पर जब नहीं भेजे तो बी ने रिक्वेस्ट किया है, और जब बी के रिक्वेस्ट पे गुड्स रखे जाएंगे तो इसको सेल्स ही बोला जाएगा, एडवांस नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। यस सर, नाउ आई अंडरस्टूड। A Limited entered into contract with B Limited for dispatch of goods. B Limited made the entire payment, and after 3 months, in the third month, B Limited requests to not to dispatch the goods. Very simple. Accordingly, the seller of the goods transferred to the buyer in the property for price or significant risk and rewards are of the ownership have been transferred to the buyer, and seller retains no effective control. Rattamar. No significant uncertainty regarding the amount of consideration. दोनों पॉइंट्स लिखने थे। गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हुआ एंड नो अनसर्टेनिटी, ने पैसा आ चुका है। 1 लाख रुपये ऑलरेडी गॉट।
So amount of consideration. So why I should postpone the revenue? Both points are over. So I should adjust the entire sale as 1 lakh and no part is treated as no part of the same to be treated as advance receipt. Normally students are making mistake. What they do not write in this format, facts, provision, conclusion, and therefore they are getting less marks. समझे बच्चा? बच्चा की गलती क्या होती है? He never writes in this way. लिखना बढ़िया आंसर, लिख risk and rewards, keep the word in your answer. Revenue is recognized, consideration, don't postpone the income. Write this. How you will not get marks? Tell me. पूरा 4 में से 4 आएगा बच्चा. Yes. फैक्ट्स लिखो, प्रोविजन लिखो, कंक्लूजन लिखो. क्यों नहीं मार्क्स देगा? क्यों नहीं देगा? 100 में से 99 भी देगा, 1 मार्क कटेगा. 100 में से 100 भी लेके आएंगे हम लोग. कंक्लूजन के साथ लिखना है, कंक्लूजन के साथ. ओके, गलती नहीं करनी है. हाँ जी बेटा, अमन तूने बराबर लिखा था बेटा. आधे बच्चों को तो गया ना बाउंसर, पूरा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए आंसर आधे बच्चे. मुझे यही तो आपका थिंकिंग डेवलप करना है. अभी समझा क्या बच्चा? से यस और नो. यस. दर्शन, कॉन्ट्रैक्ट के वजह से students are writing the answer, so it is incorrect, but I say won't give you marks for that. You only incorrect. I want provision, provision, provision. I want provision. प्रोविजन लिखते नहीं है, यू आस्क के ऐसे लॉ में मार्क्स देता नहीं है. कैसे नहीं देता? राइट डाउन प्रोविजंस के पॉइंट सेपरेटली इन योर 100 पेजेस बुक फॉर लॉ ऑल्सो. ऑडिट में भी लिखो. सेपरेट नोटबुक बनानी नहीं, मेहनत नहीं करने की. समझ में नहीं आता क्या पढ़ाई कर रहे हो, फैकल्टी बताती रहेगी ये बाय हार्ट करो करके. यू हैव रिटन दिस, चेक, आई विल शो यू. आपने लिखा है ऑलरेडी, और रट्टा मार भी लिखा होगा. किधर गई हमारी रट्टा मार वाली की नोटबुक? सी, हाँ ये देख, लिखा है ना भाई. ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू द बायर, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, नो सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी अबाउट द अमाउंट ऑफ. अरे सर ने 3 पॉइंट्स रट्टा मार लिख के दिए. लिखा देख इसने इधर. यही तो आने वाला एग्जाम में. कैसे फेल होएगा? नो वन इज गोइंग टू फेल. यस. 100 पेजेस के बुक में कहां से डाउनलोड नहीं होता मोहम्मद सोहेल जी. You have to take efforts, you have to take screenshots, you have to take write it. Those students who are attending my classes, I'm not going to give you this spoon feeding form. How she has written, see. ये मेहनत करती है, स्क्रीनशॉट लिखती है वो, फिर उसको मिलते हैं स्क्रीनशॉट्स के बाद. वो मेहनत के. मैं रेडीमेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू. बिल्कुल नहीं दूंगा कुछ भी रेडीमेड. एफर्ट्स लीजिए, वापस वीडियोस देखिए, लेक्चर देखिए, याद करिए, फिर एफर्ट्स का फल मिलेगा. एकदम नहीं. और आप कुछ भी करो, मैं नहीं लिख के देने वाला हूं. नोट्स आई वोंट प्रोवाइड यू. रट्टा मार पॉइंट्स क्या है? यू हैव टू राइट बाय योर ओन. बहुत हो गया अभी आपका स्पून फीडिंग. एंड नोटबुक निकालो आंसर निकालते टाइम. रट्टा मार पॉइंट्स, प्रोविजन सामने रखो. यू कीप द प्रोविजन बुक सेपरेटली. यस.
I am taking only accounting standard 9 ka extra questions. Other questions I am not going to take. Otherwise our batch will not get over. मुझे limited days मिले हैं. ओके उसमें प्रोविजन भी सिखाओ, सब कुछ करवाओ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन 4. रिक्वेस्ट पे, बायर के रिक्वेस्ट पे गुड्स सेलर ने रखे उसके गोडाउन में. यू ऑलरेडी सोल्ड ऑन 20th March. रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड. यस, लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ही बोल देता हूं, लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. I don't want only answer. It's a sale. No, with reason. With reason. And now you understood what you made mistakes. You normally, directly you are writing. First case. The seller has transferred to the buyer the property in the goods for price or all significant risk and rewards have been transferred to the buyer and seller retains no effective control. No significant uncertainty regarding amount of the consideration. These two you can write once. Dekho, I am not saying you write in the same way. Okay, exact lines are not possible. So, what is the wordings? Transferred word आना चाहिए. Seller has transferred the buyer's goods, property of the goods, and for a price. Transfer significant risk and rewards. Write down here words exam में. Though you are not getting the same language like this, own language is important. Suppose मैं अब भी answer लिख रहा हूँ. Seller has transferred all risk and rewards to the buyer. Seller has not retained any effective control over goods. There is no uncertainty regarding consideration to be received. Right now, consideration to be received. Now here the language is consideration that will be derived. It's okay. Hardly sentence here and there. Use simple English. But normally students make mistake. क्या mistake होती है? They write directly. This is a sale. Conclusion. Directly in one line. Record the revenue. How ICA is going to give you marks? बताओ जल्दी से. क्यों देगा ICA marks आपको? ठीक है. I hope you understood. ठीक है? कौन सा प्रोविजन लिखना है वो साइड में लिखने का आंसर में कि विच प्रोविजन वी हैव टू राइट. ठीक है, चलो अभी समझा हमारे बच्चों को कि कैसे आंसर लिखना है. वेरी गुड. नाउ दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट मेंटेन देयर 100 पेजेस का बुक, टुडे इज अ संडे, इज नॉट योर फन डे. You are going to record all these 4 standards. 30 marks का weightage. 30. कोई भी छोड़ेगा नहीं इसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा. 30 marks मुझे पूरे आपके चाहिए. भले नेक्स्ट चैप्टर में मैं रहूं या ना रहूं, पर ये 30 marks में मिलवा के जाऊंगा. ओके, योर फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. It helps ICA to decide faculties also. If you think कि सर का टीचिंग अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, गिव नेगेटिव फीडबैक्स, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अच्छा लगा तो उतना ही मैं चाहता हूं फीडबैक फॉर्म भर के रखो. 15 Jan 2015, goods of rupees 1,50,000 were sent on consignment basis. 20% of goods unsold are lying with consignee. Bhai, consignee, we have just transferred you the position.
when we transfer risk and rewards, when you transfer that possession to third party, then beta my ownership will get transferred. As a consignor, you are the agent, and I will transfer my possession to you, and you will transfer my ownership to the third party. So I cannot record as sales when I'm just transferring goods. फाउंडेशन से आ रहा है ना सर? सेल्स की एंट्री कब करते थे? कंसाइनी ने माल बेचा, याद आए? यस सर, याद आया सर, अंडरस्टूड. कंसाइनी सोल्ड गुड्स, देन ओनली. कंसाइनी ने माल बेचा तो अभी लिखा कैसे देखो. गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. If agent sells them to third party, then only revenue should be recognized. Consignment के केस में risk and rewards are not transferred when goods are sent to consignee. Risk and rewards are transferred only in if consignee transfers it to consignor. You already written this provision ना ऊपर का. So that's why ऐसे में हमने दूसरे इसमें मैं वापस नहीं डाला उसको. समझे क्या? समझ में आया पूरा? वेरी गुड, वेरी गुड. गुड सेल ऑन अप्रूवल. बेटा 2 बार ये आया एग्जाम में, सेम क्वेश्चन में 2015 में आया. उसके बाद देखो ये देखो, ये क्वेश्चन 6 2017 में आया था, जो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम नहीं था, पर नवंबर 2013 में आया था. सेम एज नवंबर 2013, 2013 सेम. एंड देन दिस क्वेश्चन इज अगेन बेटा क्वेश्चन 17 नवंबर 17 क्वेश्चन इज सेम लाइक May 15. एवरी 2 years दे रिपीटेड द क्वेश्चन. May 15 में. ठीक है, चलो अभी दूसरा क्वेश्चन भी हो गया. तीसरा क्वेश्चन 1,20,000 वर्थ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल. अरे ये भी चैप्टर आता है हमें, गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस. द पीरियड ऑफ अप्रूवल वॉज 3 months. 1/12, 1/12 से 1/1, 1/1, 2/1, 2/1, 3 months इज यस अप्रूवल डेट है 1 March तक भेज देने का. बायर सेंड 75% का अप्रूवल एंड नो अप्रूवल फॉर रिमेनिंग गुड्स अप टू 31 March. अरे हो गया पीरियड ओवर, पीरियड ओवर. Record the income. Revenue should be recognized if buyer formally accept the goods. Now ये sale or return की lines है. And revenue also recognized if period of rejection is elapsed. 2 lines है. ये लिखो आपके नोटबुक में, 100 pages की बुक में. If goods are sent on approval basis, write down these lines. Revenue recognized, revenue is recognized if goods are, यहाँ पे ऐसा लिखो, if goods are sent on approval, if goods are sent on approval, revenue is recognized. Buyer formally accepted goods if period of rejection is elapsed. Period of rejection. मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा निकला है, आई नो दैट. थक गए हो रहे थोड़ा. संडे का दिन जरा एनर्जी लेके आऊंगा वापस.
आज जरा क्लास को छुट्टी दूंगा 10 बजे के बाद, एनर्जी रिगेन करूंगा, कल और एनर्जी से आऊंगा। ठीक है बेटा? 2.5 घंटे जोर जोर से चिल्लाते हुए लेक्चर पूरा लेना, दिमाग में कॉन्सेप्ट डालना, थोड़ा टाइम लगता है। आधे घंटे बात कीजिए बेटा, और ये दूसरे के दिमाग में कॉन्सेप्ट डालना, ये प्रोफेशन डेंजरस है। यस, ओवर। चलो, सो कंक्लूजन, पूरा सेल्स बताएंगे, पूरा पूरा सेल्स बता देंगे। ट्रेडिंग एंड पे एंड एल में वी हैव रिकॉर्डेड इट एज सेल्स। समझे? यस सर, समझे। अपार्ट फ्रॉम द अबाउ, द कंपनी मेड 7,80,000 का कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन कैश सेल्स। हाँ करना, माइनस ट्रेड डिस्काउंट चलेगा, कैश डिस्काउंट नहीं चलेगा। सो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 60, 120, 120, 741, total revenue is recognized. So this is the answer. ट्रेड डिस्काउंट इस ग्रॉस इनफ्लो में से माइनस हो जाएगा ना। ट्रेड डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न नहीं माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है। यस बेटा, 15 मिनट से ब्रेक देने के लिए बाद में, अभी नहीं। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। यू हैव टू कीप सम पेशेंस। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। टेल मी द आंसर। नवंबर 16 में आया था। टेल मी द आंसर। शॉर्टकट नहीं चाहिए मुझे एक भी, विथ रीजंस आई वांट नाउ। दीज आर डिफरेंट स्टेजेस। 15 जनवरी को रॉ मटेरियल लिया था। यस, यस बेटा। अमन बोल रहा है आज थोड़ा घूम के आओ। यस बेटा, आज घूम के आऊंगा। आप लोग पढ़ाई करना है, हो गया ना बेटा? अभी लाइफ का मेरा ऑलमोस्ट 15 साल तो इसी में गए हैं, तो अभी आप लोग भी पढ़ाई में 1 साल तो डाल ही सकते हो। चलो बताओ बताओ बताओ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। रॉ मटेरियल स्टेज 1, फिर उसका पल्प बनाया, फिर थिक पेपर बनाया, रॉ मटेरियल का, उसके बाद पल्प बना के थिक पेपर, फिर फाइन पेपर, फिर रेडी फॉर सेल, फिर इनवॉइस इज रेस्ड एंड डिलीवर्ड। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे बेटा? रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे? when raw material purchase, when pulp is prepared, when ready for sale, sales agreed and invoice is raised, क्या डिलीवरी टाइम पे? यस, बताओ क्या लगता है आपको? आंसर दो यार, जल्दी जल्दी आंसर दो। चलो चलो चलो। यस, गिव मी क्विक आंसर, क्विक आंसर।
जल्दी से एक क्विक आंसर देने का सर। बोलो रे। वेरी गुड दर्शन, वेरी गुड। When sales agreed and invoice is raised, बराबर है। 15 मार्च को सेल्स रिकॉर्ड करेगा मैं, 15 मार्च को। वेरी गुड प्रीतेश, वेरी गुड प्रीतेश। सेल एग्रीड पे नहीं, हाँ सेल एग्रीड पे अमन। वेरी गुड बेटा तनिष्का, वेरी गुड। चेक करो। As per S9, revenue is recognized in terms of sales could be recognized only when ownership has been passed by the seller to the buyer. And there is no uncertainty, nothing regarding the collection of consideration. Lines आने चाहिए। हाँ सर, ये तो हमें पता है। The sale value is fixed and determinable, and property of the goods is transferred to the buyer. Yes. So 15 मार्च, sales price 3,50,000. 3,50,000. Cost is 1,80,000. यहां तक आई। So gross profit minus expenses 20,000, नेट प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,00,000, ये लिखना जरूरी है। इसके मार्क्स से COGS is 1,80,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी, और उसके बाद एक्सपेंसेस 20,000 अलग से। हाउ 20,000? द डिफरेंस बिटवीन टू 20,000। सॉरी ये साइड मत देखो। 20,000 का एक्सपेंस, 3,50,000 का सेलिंग प्राइस, 1,80,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और COGS बोलो। सो इसके मार्क्स हैं। ये नहीं लिखा तो मार्क्स कटे। चलो 6 नंबर और 7 नंबर ऑलरेडी डन। 8 नंबर बोलो। 8 नंबर का बोल दो आंसर। चलो लास्ट 5-10 मिनट्स हो गया खत्म। सुबह सुबह थ्योरी लेके बैठना मतलब आपके साथ, उसके बाद सेगमेंट सिखाने वाला हूं आज। डोंट वरी, आज सेगमेंट सिखाने वाला हूं। बहुत से बच्चे रिकॉर्डेड में देख लेते हैं, पर मैं आशा करूंगा कि भाई आप लाइव में आओ। मॉर्निंग आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, पर बेटा ऑप्शन नहीं है पढ़ना है तो। बाद में बहुत से बच्चों को लगता है कि विल वॉच इट लेटर, लेटर वेटर कुछ नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। चलो करो बेटा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा पानी मार के आओ जिनको नींद आ रही है। आठ को सॉल्व करो चलो। करो 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 8 नंबर करो, तब तक मैं भी पानी पीता हूँ। ठंडा हो गया मेरा पूरा पानी।
यार कलर और ग्लास पे कोई मत जाओ बेटा, सुबह सुबह गर्म पानी है ये, नहीं तो कुछ अलग लगेगा आपको। स्क्रीन बदल देता हूँ। बेटा मई 24 के बैचेस जल्दी स्टार्ट होंगे। रिजल्ट तो आने दो बेटा, फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अभी एग्जिस्टिंग बैचेस जो चल रही है उसके साथ साथ, सो डोंट वरी, हो जाएगा बेटा, जल्दी हो जाएगा। चलिए, क्या हुआ आंसर का बेटा, बोलो। चलो सरिता भाई, क्या हुआ? नहीं बेटा, बेटा नहीं 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 हर्षित, एनआरवी और कॉस्ट में बेटा एनआरवी को लोअर तब लिया जाता है जब हम लोग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। जब प्रॉफिट निकालते हैं तब ना, हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो काय को एनआरवी पे शिफ्ट होना है। आया समझ में? तो कॉस्ट ही लेने का वहां पे। गुड क्वेश्चन, गुड थिंकिंग। यस, सी बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सर्विस का क्वेश्चन था ये, सर्विस, गुड्स का नहीं था। फर्स्ट थिंग, आंसर उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट द आंसर अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन इज नॉट ऑफ सर्विस, क्वेश्चन इज ऑफ, सॉरी, नॉट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, क्वेश्चन इज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। You got this? Sarita publication publishes a monthly magazine on 15th of every month. Okay. It sells advertisement space. इनका एक मैगजीन आता है तो वो रहता है ना कॉर्नर में एडवर्टाइजमेंट का। ओके, अच्छे अच्छे एडवर्टाइज, डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट होता है या कुछ अलग अलग एडवर्टाइजमेंट का एक छोटा सा, यस, कोई गुम गया उसका भी एडवर्टाइज होता है, शादी के लिए जिनको आना है उनके लिए भी लिखा रहता है। तो एडवर्टाइजमेंट का बेटा, जिनको कुछ प्रॉपर्टी बेचनी है वो लोगों का एडवर्टाइज होता है, तो उसके लिए देते हैं न्यूज़पेपर वाले। तो दैट, नाउ दे मेड अ कॉन्ट्रैक्ट कि फर्स्ट यू हैव टू सेंड अस ₹80, सपोज 100 रुपीज का एज्यूम एडवर्टाइजमेंट का वो कोना दिया हुआ है, एग्जाम्पल। सो 80 रुपीज यू हैव टू पे मी इन एडवांस and the balance you can release us 30 days, within 30 days of the release of the publication। जैसे ही मैगजीन आ जाएगा 20 रुपए रिलीज कर देना विद इन 30 डेज, जब से पब्लिकेशन होगा उसको।
एडवांस 80 रुपीज ले रहे, 20 रुपए बाद में दे रहे. द सेल ऑफ स्पेस मार्च 2014 में इशूड इन February 2014. जिसको भी पैसा देना है मार्च 2014 में we are going to do your advertise. The magazine was published on schedule date, that is March 14. They received 2,40,000 on 10th March और एक महीने के बाद मिला 60,000. Now this question is tricky, sir. Advertisement हो गया and that बंदे ने बोल दिया सर 60,000 I am not going to pay. तो क्या होगा? तो क्या होगा? Here, understand the concept. हाँ. This is rendering of services. Performance should be either made on completed service method or proportionate completion method, whichever is relevant. In the given case, sorry, इधर facts नहीं था, ये provision था और ये conclusion है. Income accrues जब advertisement is appearing before public. The advertisement should be considered on the day of advertisement is seen by the public. Public को कब सामने रखा गया एडवर्टाइज? पब्लिक के सामने एडवर्टाइज रखा गया 15th of every month. Date is important. Date is important. 15 March publication, and therefore whole 3 lakhs is recognized on 15 March. Revenue is not 60,000 to be received. Accrual concept of accounting. 60,000 भी record करेंगे as in receivable, as professional fees और advertisement fees receivable. अरे ठीक छे के? ठीक छे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. हो गए लास्ट 2 questions. Are you finding S9 interesting? So यहाँ पे proportionate नहीं, completion. Yes, completed method है ये. थोड़ा दिमाग लगाने का उधर. क्वेश्चन थोड़ा अलग भी आ सकता है. आजकल के एग्जामिनर स्मार्ट हो गए, पर संकेत सर ने भी स्मार्ट होके आपको सिखाया हुआ है. All provisions applied logically. If you get some different answer, it's okay. If different question, it's okay. But try to answer it. Don't give up. At least try to apply the provision. Everything is written in your 100 pages book. Don't worry. Recall that book and apply the provision. ठीक है? चलो 9 number बताओ. 9 number. हाँ जी बेटा. अमन बोल रहा है मेरा तो गलत हो गया. ये होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. सबसे बराबर लिखने की कोशिश कर आंसर को. एप्लीकेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग सर. दर्शन बोल रहा है. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रुप 2. फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग इन द लाइव सेशन ऑफ आईसीआई के हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज पे. यस, फर्स्ट टाइम. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई नेवर टॉट ऑन बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप. पहली बार बच्चे इसका फायदा उठाएंगे ऐसा मुझे लगता है. आई होप एवरीवन इज क्लियर. यस, पिछले लेक्चर्स भी है वैसे तो अवेलेबल.
You can watch other faculty sessions also if you want some extra concept clarity. And if you have clarity मेरे वजह से, तो फिर no need to watch anything. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड. ब्रेक के बाद मिलेंगे नए एस के साथ जोश से. एस 17 बढ़िया एस है आज. आज थोड़ा तूफानी करेंगे. कितना यूज टू हो गया हूं मैं अभी फॉर दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स. स्टूडेंट्स के कमेंट आए तो अच्छा लगता है, तो लाइव का फीलिंग आता है. वैसे तो अभी अकेले बैठ के रिकॉर्ड करने की आदत लग गई है मुझे, बट इफ यू आर गिविंग कमेंट्स तो मुझे अच्छा लगेगा. मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं आप सबसे. आई वॉन्ट टू नो एवरी वन फ्रॉम यू. Every one of you, I want to know, beta, please try to understand. Is it possible to focus 100% when accounting standards, when I teach you accounting standards? Because you know, practical topics are very easy to focus or to concentrate. But this type of accounting standards, they are very boring part. So, आपको मैं रख पाता हूँ फोकस ड्यूरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आगे का लाइफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है. यस. नहीं सुनील कुमार, नहीं बेटा. प्रीतेश ने करेक्ट आंसर दिया है. आई वॉन्ट टू नो विच वर्डिंग्स यू आर गोइंग टू यूज. कोमल बोल रहे हैं यस सर. सिर्फ कोमल से आंसर आया मेरे को, बाकी किसी से आंसर नहीं आया. दर्शन दर्शन दर्शन, यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर. ठीक है. यस कृति जी. मतलब एस ये थोड़े बोरिंग है, पर बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू होने के बाद तो इजी जाते रहेंगे. एस 17 में वैसा नहीं होगा, गारंटी आज. एस 17 में यू विल फाइंड इट सिंपल. प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना. ओके. यस ठीक है. जो हर्षित बोल रहा है प्रोविजन के टाइम कंसंट्रेशन बना रहता है, क्वेश्चन के टाइम पे तोड़ जाता है. उल्टा है इसका. चलो ध्यान दो. आर लिमिटेड सोल्ड गुड्स. ओके, सुबह का टाइम है ना, थोड़ा होता है वैसे. चलो 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 ध्यान दो. यस. आर सोल्ड गुड्स टू एजेंट एज पर टर्म्स क्या था? कंसिडरेशन इज पेबल. आप है ना वो लाइन को मिस कर रहे हो. कंसिडरेशन इज पेबल विद इन 1 month.
and the event delay in the payment, interest is chargeable at the rate of 10% per annum from the agent. The company has not realized interest from the agent in the past. ये लाइन था. ये लाइन is the crux of this problem. Past में कभी realize नहीं हुआ है. You never realized that amount in the past. For the year ended 31st March 2017, interest due from the agent amounted to rupees 5 lakhs. ये rupees है. Question mark आ गया. The accountants of R Limited book 5 lakhs as interest income. Many students have written, sir, time proportionate basis. Wrong. Beta, how to write the answer? Ability to assess the ultimate collection with reasonable uncertainty is lacking. Then revenue should be postponed. Past में कभी collect नहीं किया. ये line आना चाहिए था. That's why I was waiting for your answer. Who wrote it correctly? Risk and rewards का था नहीं ये. Risk and rewards का था नहीं. Ved Prakash answered it, but no sentence of ultimate collection. Not a single student has wrote. हाँ, अमन ने लिखा है. अमन ने लिखा है. कौन सा लिखा पर अमन ने? यही लिखा था ना. 17,20,000 कहां से लिखा इसने? Why Aman you wrote 17,20,000? 1720 कहां से लिखा? How we wrote this answer? भाई कुछ भी लिखते हो आप लोग. So therefore, agents have agreed to pay the amount of interest. There is elementary of certainty associated with this receipt. The accountant is correct regarding booking of 5 lakhs as interest amount. If agent have agreed, if लिखना था. If agent agreed, ये कंक्लूजन है. थोड़ा गलत हुआ है. ये कंक्लूजन है. And if agent is agreed to pay the amount of interest, तो है वो. ये कंक्लूजन बीच में से निकाल दो. ये प्रोविजन है. समझे क्या बेटा? समझा? चलो बहुत बढ़िया. 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ऑलमोस्ट 8:25. 5 मिनट्स होगा कल के जैसा. 8:45 को ब्रेक लेंगे. ब्रेक खत्म करेंगे और फुल एनर्जी से अप टू 9:30 17 वी आर गोइंग टू लर्न सेगमेंट रिपोर्टिंग. 4 स्टैंडर्ड्स हो गए. 1 से 10 के 4, 4, 5, 7, 9. 4 स्टैंडर्ड्स ओवर. गुड. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वीक में क्लास स्टार्ट हुआ था. 4 days 4 standards and we are going to start with 5th standard. Now 17, 18 are easy. 19 and 20. 19 बाप पे बाप स्टैंडर्ड. पहले बता के रखता हूं, फुल फोकस लगेगा 19 में. It's not difficult, but your attention is important for 19. 17, 18 हो जाएगा. 18 will be a next time. 17
प्लस 18, थर्सडे से 19-20 वी हैव टू फिनिश विथ, और उसके बाद संडे तक। हाँ ठीक है। सो ऑलमोस्ट 5 दिन में 5 स्टैंडर्ड खत्म किया आपने। गुड। सर्टन गुड्स रिट्रोस्पेक्टिवली कोई देगा नहीं, कोई देगा नहीं ये पैसा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन कवर्ड था। इंक्रीज इन द सेल प्राइस ऐसा होता नहीं, अल्टीमेट कलेक्शन इज विथ नहीं होता, ये अल्टीमेट कलेक्शन है। चलो, ये वन लाइनर में आपको आंसर्स लिखना है, अप टू 10 क्वेश्चंस। वन लाइनर में आपको आंसर लिखने हैं, ये 10 के 10। नॉट रीजनेबली सर्टन, यस बेटा करेक्ट है। चलो ब्रेक ले लो, वी आर गोइंग टू मीट एट 8:45।
वेलकम बैक वंस अगेन बेटा फॉर S17 इट्स अ सेगमेंट रिपोर्टिंग. अभी पूरा ध्यान देना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेगमेंट रिपोर्टिंग is only a disclosure standard. '18 is also disclosure standard. Sir, means we are not going to pass any journal entry in this accounting standard. So you are aware about this. कि accounting standards are basically divided in two parts. One is accounting standard, second one is disclosure standard. तो ये है अपना disclosure standard. अभी सर सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में क्या बता रहे हो? एक ही मिनट बेटा, मैं आपके कमेंट्स खोल देता हूं. कुछ कमेंट्स होंगे तो ओके, ठीक है. तो बेटा सेगमेंट रिपोर्टिंग, व्हाट हैपेंस, suppose if Sanket sir is doing multiple businesses, multiple, under one business, he has multiple, products. Or it might happen that he has different types of, in area wise. For example, he has branch at north. He has some businesses in south. Not business, same business, but different products either. Or area wise, बिजनेस इज डिफरेंट. मैं वापस एक बार बोलता हूं हिंदी में. संकेत सर जो कंपनी चला रहे हैं वो कंपनी के प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं या एरिया ऑफ बिजनेस अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, सपोज संकेत सर कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, एग्जाम्पल. तो इट माइट हैपन दैट इन साउथ सीजन बेटा थोड़ा साउथ का हॉट सीजन है, ईस्ट में भी थोड़ा कोलकाता साइड भी बेटा सीजन थोड़ा सा गर्मी है, तो इधर कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा चलेगा. वही नॉर्थ में थोड़ा सा कम हो जाएगा. सो कोल्ड ड्रिंक है. टी बिजनेस भी है जो नॉर्थ में चलेगा ज्यादा, साउथ में थोड़ा कम चल रहा है. तो प्रोडक्ट वाइज to see area wise also, product wise. If I'm doing business in multiple means multiple products, you can say, so in that case I have to record some items which are beta important one, that separately. तो मैं क्या करूंगा, वो प्रोडक्ट्स को मैं सेपरेटली रिकॉर्ड करूंगा. फॉर दिस चैप्टर, for this accounting standard, I will prefer to take illustration first. Illustration. So बेटा इसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक बिजनेस सेगमेंट और यू कैन कॉल इट एज ऑपरेटिंग सेगमेंट, एंड सेकंड वन इज ज्योग्राफिकल सेगमेंट. ज्योग्राफिकल सेगमेंट इज बेटा एरिया वाइज, कंट्री वाइज भी हो सकता है. अभी एरिया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल ये एरिया भी कर सकते हो, या इंडिया पाकिस्तान एशियन कंट्रीज अलग, यूरोपियन कंट्रीज अलग, वैसा भी सेगमेंट दिखा सकते हो. सो इट्स डिपेंडिंग ऑन यू हाउ टू मेक सेगमेंट्स, बट देयर आर सर्टन रूल्स, एंड दैट रूल्स आई विल टीच यू नॉट फ्रॉम theory point of view first. Sir, other standards I have taken theory first, but in this standard I will take practical problems first. I hope you are clear with the concept now. सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट मतलब टुकड़े करना. सेगमेंट का मीनिंग होता है टुकड़े करना हिंदी में. तो सेगमेंट को सेगमेंट वाइज रिपोर्ट करना, ये हम लोग सीखेंगे accounting standard 17 through. Sir, this standard is not telling you any entry, but this standard gives you disclosure. Write down in your 100 pages book these things. Disclosure standard. Clear छे? तो क्या समझ में आया आपको? Yes बेटा. बेटा one point I want to make it clear. I won't take names of any
institutions. But day before yesterday, notification में ICI के साथ some faculties के videos मुझे मिले. And many times what happens, now that person, he was teaching from some Google. ऐसा एक कंपनी ओपन कर रहा था और वो कंपनी की इंफॉर्मेशन बता रहा था. This is earning per share. This is PE ratio. And he wasted almost 30 to 35 minutes by reading the report. मैं जस्ट लेक्चर गो थ्रू कर रहा था दो के स्पीड से, फटाफट. And then I came to know, last 45 minutes से, he has not given a single formula. He explained only ये कंपनी, वो कंपनी, इसका इतना कैपिटल, इसका इतना पी, इसका इतना मार्केट प्राइस. And see, average student likes these things, average students, but is not going to pass in exam. Explaining it for next 35 to 40 minutes, you have created interest of the audience, no doubt. But बेटा, बच्चा ये कभी एग्जाम में लिख ही नहीं पाएगा. I don't want to disclose names or anything of that faculties and all, but just you are showing such things which is easily available on Google, that बच्चा can do it in on the time pass के time पे भी, and focus is not on subject. So अभी एक बच्चे ने सिर्फ query डाला, sir any practical view. I will show you segment reporting का practical view. I will show you ITC का report. I will show you Ambani भाई का report. But beta, ultimately, what is going to happen? You are not going to get marks from this. हाँ, टाइम पास में आप लोग खुद से करो ना कि सर ने सेगमेंट रिपोर्ट सोचा सिखाया. Now I will see on one of the annual report how segment report is presented. Do that. But passing के लिए कुछ जरूरत है क्या आप भी? And you want send such type of discussion, तो एग्जाम के बाद आप मिलो मुझे. I will show you reports. I already have some reports in my PPT, but I removed it from these PPTs beta, because our focus must be on our syllabus. Now it's your thinking for, you have articleship. In articleship, you can learn these things. तो इसलिए तो self based module आए ना, उसमें कर लो ये सब. Okay, ठीक है. Yes. चलिए, अभी एक प्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे अब बीच. कौन सा क्वेश्चन है भाई? स्टडी मटेरियल ओपन करो. ए फर्स्ट थिंग आई एम टीचिंग यू इन द रिवर्स वे. इज इट ओके? मुझे भी ज्ञान है ना कैसे सिखाना चाहिए. सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली. स्टडी मटेरियल में आ जाइए सर. सर AS14 का क्या? यू हैव अ सेपरेट चैप्टर, accounting for amalgamation. So don't waste time in understanding the AS14. That faculty will take this AS14, who is the respective faculty. He will teach you AS14. Don't worry. I don't know about the assignment, मुझे मिला है क्या नहीं. हाँ, but इतना बताता हूँ, वो faculty आपको AS14 सिखा देंगे, जो भी लेंगे वो. इधर है रे सेगमेंट. हाँ, लाइंस बाद में सिखाएगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन ले रहा हूं. चलो,
Come to illustration number 1. Sir, first time reverse and then I will teach you the provision. Please, sorry for that. But it will be easy once you understood the problem. Illustration 1, what it talks about. The chief accountant of Sports Limited gives you the following data regarding 6 segments. M, N, O, P, Q, R. 6 segments are there. Clear with the concept? Yes. Segment asset, 40 rupees. Segment 80, 30, 20, 10 asset. Segment results. Results means profit or loss. Some segments are in losses. Sir, should we record losses segment also? If there is a criteria, all 6 segments results you cannot show. Segment revenue, turnover. The chief accountant is of the opinion that only M and N are reportable. Now, reportable means what? You have to give data of that 2 segments. How to give data? Wait, we have problems. First, this question, we have to decide, क्या decide करना है? Which are reportable segments. Sir, new things, you will like this. Reportable segments कौन से sir? ये हमें देखना है. So now we have to understand the provision. What is given in Accounting Standard 17. Let's understand it. Let's understand it. Reporting segments. A business segment or geographical segment. Those segments, sir, I already taught you. Segments are there. टुकड़े है MNOPQR, पर उसमें से रिपोर्टेबल कौन सा है? रिपोर्टेबल कौन सा है? Which you record in your notes to accounts. Revenue from sales to external customer. External, outsiders, and from other transaction with other segments. Other transactions with other segments means internal. M ने N को बेचा, N ने O को बेचा. Internal is 10% or more of total revenue. External plus internal. So this is the first criteria. Reportable segment कब होएगा? Reportable segment कब होएगा? If 10% into total revenue, ये जो है total revenue, इससे यदि segment का revenue is greater, so that segment has to be reported. Okay, ठीक है. पहला क्राइटेरिया समझ लो. You can write here in simple language. Segment revenue must be greater than 10% of total revenue. ये पहला क्राइटेरिया. Segment assets are 10% or more of the total assets of all segments.
अरे एक रह गया, सो रेवेन्यू का रहेगा दूसरा सेगमेंट रिजल्ट्स, वेदर प्रॉफिट और लॉस 10% or more of combined profits of all segment profits, combined results of all losses, whichever is greater in absolute amount, mathematics. Second criteria, segment result must be greater than 10%. सेगमेंट का रिजल्ट अकेला टोटल 10% प्रॉफिट और लॉसेस whichever is higher. Explanation. Yes. तीसरा condition. If segment assets are 10% or more of total assets of all segments, all these are Rattamar. How many of you are doing it for the second time? Tell me it in the comment section. Yes, sir, I already done with the standard. I came here just for the revision. Many of you are doing it for the first time. It's okay. But those who are doing it for the second, third time, beta, please, I want to know the names. I want to take some suggestions from you. Yes. No, beta. Any one condition. Still one condition is there. Still one condition is remaining. I will explain it later. I will explain it later. I will explain it later. Wait. पहले ये सेगमेंट का देख लो. 1200 into 10%. 120. If your revenue is greater than 120, if your revenue is greater than 120, then beta your segment is reportable one. No one is better doing it for the second time. I think all are doing it for the first time. But I don't want to ask you any question. I just want to see how many of you have done already. ऐसे हमें सब बच्चे पहली बार ही करने को आते हैं ये सब. Very good. So 120 revenue. M का revenue is 300. So M is reportable segment. M is reportable segment. M का ये report किया जाएगा. क्या report क्या करना है? That is the second question. But first decide whether this is reportable or not. So M is reportable. Second one. N is also reportable. OPQR are not reportable for first criteria. ठीक है. Yes. Second criteria. Combined results. Combined results. Profit or loss. Combined results of profit different. Combined result of segment loss is different. अभी profit कितना है? 50, 10, 60, 70, 30, 100. 100 is combined profit. Combined loss is 200. Whichever is higher, 200 in absolute terms. So 200 को absolute में लिया. I know 100 is greater than minus 200. But absolute में देखा तो 200 means convert it into positive. 100 or 200, whichever is higher. So 200 into 10%. 20. 100 or 200, whichever is higher. Are 50, 10, 10, 30.
60, 70, 30, 100 and negative का minus 200, whichever is higher in absolute terms. So 200 का 10% कितना होएगा? ये second criteria. बेटा you are getting this concept. Theory समझ में आ रहा है क्या? Reportable or should I take first theory or is it easy to understand? चलो. So which are 20 के ऊपर वाले? M, N, नेगेटिव को पॉजिटिव में करो. OP ना, Q ना, R. So MNR are reported under second criteria. Okay. ये रिपोर्टेबल था, ये ऑलरेडी रिपोर्टेबल था. अब एक नया रिपोर्टेबल आया. इजी. हाँ जी. Now assets are 10% or more. Asset 10. 20. M है 20 के ऊपर, N is 20 के ऊपर 80 है. O and PQ. So all are reportable, sir. Oh my God. So any condition के अंडर जो आएगा, that is reportable. But what is the second criteria? ये second criteria you will read and you will tell me in the next session. Second criteria I am not going to explain you now. You will explain me. Okay. First criteria clear che. First criteria. So you got reportable. And here in this question all are reportable. But still there is a second criteria. And what that second criteria is, you are going to explain me by reading it in the theory. Okay, you read this theory and tell me interpretation in the next session. So here all segments are reportable. ठीक है? Sir, now I am going to show you what is the reporting, how to make the reporting. You understood the first criteria, 10% का criteria. 10% of segment result, 10% of segment revenue, and 10% of segment asset. Asset, revenue, result. ARR, ARR. Asset, result, revenue. Result is profit or loss. You have to take absolute terms. मतलब profit की total, loss की total, whichever is higher in absolute terms. सब count है बेटा. Till now, there is no difficulty. I hope you are clear with this. First time का accounting standard. Many of you beta are depending on me. And I don't want to break your trust. Start to end आप लोग रहते हो लेक्चर में, और जो भी बच्चे बाद में रिकॉर्डेड में देखते हैं बेटा, try to attend it in the live session. ठीक है? Enjoy करोगे आप लोग. Now we are going to meet on Tuesday. इसके बाद एकदम क्लियर छे. Hardly 5 students are giving comments. बाकी के क्या सो रहे क्या? अभी मैं आता हूं रिपोर्टेबल में. नेक्स्ट सेशन में बेटा आई वांट
कि every one of you will read the theory from the study material for this standard. Now next 2 to 3 standards, I'm going to take it in the same way. First problems and then I will correlate with the theory. Okay. So आपको bore भी नहीं होगा theory में and your interest will be 100%. While reading theory, you may give 100% concentration. Okay. So we will first learn practical problems and then we'll take a theory. मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, एकदम क्लीनली स्लोली कॉन्सेप्ट एक एक दिमाग में डाल रहा हूं. ओके, वेरी गुड. अभी रिपोर्टिंग क्या है? सर, वी अंडरस्टूड रिपोर्टेबल सेगमेंट्स. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू रिपोर्टिंग. ठीक है. यस, देख लीजिए क्वेश्चन को देख लीजिए पहले. यस बेटा. Forging shop division. Forging shop division. Are silent है बेटा. Forging shop division. What is forge? Yes. To make anything which is stronger is a forge. So यहाँ पे material is getting stronger. So that division. Sales to bride bar division. This is internal transfer. Other domestic sales other than our internal transfer, outsiders. Export, outsiders. Bride bar, internal transfer. Export, only export to Wanda. Fitting divisions. Export only to Maldives. So first we have to understand. Head office, forging, bride bar, fitting. Pre-tax operating result, EBIT. Head office cost reallocated. Interest cost, fixed asset, current asset, long-term liabilities. Now what is to present? How to present the answer? This question is only for presentation of the answer. See, segment report. Now you are doing segment. You have 3 divisions: forging, bride bar, fitting. This is very important. Inter-segment elimination. Inter-segment elimination.
इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन। एक मिनट हाँ बेटा, हाँ जी। So when I am talking about business segment, this is business segment reporting. I have three departments: forging, bright bar and fitting, inter-segment elimination and consolidation. That is how I am going to record it. This is how you have to give it presentation. Serial number लिखता हूं इधर. A, segment revenue. Under that you have sales. Domestic, you can check 90. Export 6135. Inter-segment, this is external. Then inter-segment 4575. Separately presentation. Domestic, export, external, internal, total. So 100 पेजेस के बुक में क्या लिखना है आपको? रिपोर्टिंग. पहले लिखो रिपोर्टिंग. राइट डाउन विथ मी. Then we will write that provision afterwards. Business segment. Serial number, particulars, divisions, or whatever the products or products. चलो. Divisions, different divisions और products. उसके बाद क्या चल रहा है यार? सब गायब क्यों हो रहा है? अरे यार क्या है ये? सारी एंजॉइंग ना बेटा. रिपोर्टेड सेगमेंट्स प्रेजेंटेशन लिख के दे रहा हूँ. 100 पेजेस के बुक में अपडेट करना. चलो ठीक है, इधर तो लिखो प्रोडक्ट्स और डिविजन्स. देन इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन. And then write down consolidation, consolidated total, serial number A. प्रेजेंटेशन में सेगमेंट रेवेन्यू, अंडर दैट सेल्स.
फिर लिखो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एक्सटर्नल सेल्स, ऐसा अंडरलाइन करो। एक्सटर्नल सेल्स सामने अंडरलाइन करो, डोंट राइट अमाउंट्स, ओनली डबल अंडरलाइन। इंटर सेगमेंट सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू, skip one line. B. B. And no inter segment. Then beta इनका total elimination. So zero in consolidation. So you will record only outsiders revenue. 6795. But for presentation, you will write external and internal and total revenue. Easy. But total revenue will be same like external revenue. Because in consolidated, you won't write, you will eliminate internal. आया समझ में? कंसोलिडेशन में एलिमिनेट हो जाएगा इंटरनल, लाइक ब्रांच अकाउंट्स। एलिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट। 457545, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ बी, राइट डाउन बी, एक लाइन छोड़ के स्किप वन लाइन एंड राइट डाउन segment results. Okay. Now, pre-tax results. उसके पहले segment results 240, 30, 12. So write down B segment results, B segment results given. B में लिखो segment result first dash given. Then you have head office expenses. Take only total. On question you can write take only total in consolidated. Take only total. Second, 144. Then operating profit. Next लिखो operating profit. ऐसा double underline करो. Operating profit double underline. Then you have interest cost. Only total. Take only total को arrow कर दो. Take only total. 682, 16. And next dash, profit before tax, double underline. No segment wise, only in total column. Only in total column. See, information related to one line, please blank rakho. One line blank. Information in relation to assets and liabilities. Information in relation to assets and liabilities. Write down in 100 pages book. Huh? Why element? कौन सा एलिमेंट? इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन. एलिमेंट नहीं है बेटा, वो एलिमिनेशन, मतलब हमने कम कर देना. वर्षा. सेगमेंट एसेट्स में
Fixed asset 360,180. 360,180. 180 अलग से है. We will consider only अलग से. 180 नहीं, 75 and 72 different. 180, 60, 135. Then unallocated assets 70 by 72 only in total column. Segment liability 30, 15, 180, 225. Long-term liability 57. And total liability 282. Over. So fixed asset, net asset, segment assets, unallocated corporate asset, total assets. Total को double underline करना. Segment liability, unallocated liability and total liabilities. खत्म है रे, खत्म है. एकदम easy. And second one, geographical market. Geographical market में domestic sales, export sales, export to Wanda, export to Maldives and consolidated. Home sales. अभी home sales देखो. Domestic sales. $90. Then export of, yes, forging sales 6135. 300 of bright and 270. Total 6795. Yes. Area wise, geographical area. Wanda, Maldives and by इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है. इन्होंने किसको माल बेचा था? बस एक्सपोर्ट सेल्स, नाम नहीं दिया था. बाय फॉगिंग शॉप डिवीजन. अंडरस्टूड बेटा? प्रेजेंटेशन समझ में आया? So what we are going to represent presentation, business segment ऐसा, geographical segment ऐसा. ये होता है presentation. I hope you are clear with this presentation. Yes, beta. Any difficulty you can tell me. जो नहीं समझ में आया. कौन सा है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था? टेल मी. 5, 4, 6, 7, 9 और 17. Which one is interesting one? जेन्युइनली बताओ. हर एक जन अपना अपना फीडबैक दो. यस. प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ पेज 17. बहुत इंपॉर्टेंट एस है. स्टिल वी हैव नॉट कवर्ड थ्योरी. बेटा theory darshan I am going to explain. Business segment and geographical segment, both are important. Theory I haven't taught you, beta. So please have patience. You read theory according to you. Beta, please go with the theory part. Now you understood what is domestic, what is export, how to do business ke reports, what we are going to report. 10% का criteria, 75% का criteria is not yet over. 75% का criteria you have to do by your own. In next session I am going to explain you. हर एक ने अपना ओपिनियन दिया. वर्षा प्रीतेश बोल रहे हैं 17, माधुरी बोल रही है 17, राजू कुमार बोल रहे हैं 9, किरण जी बोल रही है 59 एंड दर्शन बोल रहा है S4.
अपनी अपनी चॉइसेस है। आर्या बोल रहा है S9 इज इंटरेस्टिंग बट ट्रिकी था। 17, यस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट टाइम when you come to the class 100 pages का बुक मेंटेन करो। आई एम गोइंग टू शो यूर बुक। एक दो स्टूडेंट्स के बुक्स आई विल शो यू इन द नेक्स्ट सेशन, सो इट विल बी मोटिवेशन फॉर यू। ठीक है। मुझे कौन सा अच्छा लगता है? देखो नया सीखना होगा तो 17 इज बेस्ट ना। 9, 7 ऐसे तो सभी एस अच्छे लगते हैं। आई लाइक ऑल एस बेटा, ऑल एस। ठीक है। 7 भी मस्त था एकदम। चलिए, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। पढ़ाई करते रहो, सीखते रहो। बाय बाय।